Good morning, friends. Today topics again is continuity differentiability part 5. मैं एक पाँच पाँच क्वेश्चंस का जो आपको सीरीज दे रहा हूँ. दिस इज द क्वेश्चन नंबर हो गए थे. तो अभी टेकन द क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24 एंड 25. बट इज वेरी थोड़ा डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स लिए हैं मैंने अभी. प्रीवियस में एक जनरल ऑब्जर्वेशन थे, बट इज मेक द डिफरेंट टाइप ऑफ सम प्रॉब्लम्स. So how to solve this different type of problems is very important है. जनरल नेट बट यूज होते हैं ऐसे जनरल प्रॉब्लम्स के. जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं, दिस इज हियर. तो बहुत ही सिंपल एंड लॉजिकल वे में हम कैलकुलेशंस को फाइंड आउट किया जा सकता है. सो टेक केयर, दिस इज इम्पोर्टेंट. तो फर्स्ट जो भी गिवन हो उसके वर्क करेंगे, और जो रिक्वायर्ड्स होगी वो भी हम वर्क करेंगे. सो नाउ कम, देखिए क्वेश्चन दे दिया है कि f of x plus y is equal to fx plus f of into fy for all x y belongs to R. F of 5 is to f dash 0 3, so then f dash 5 is equal to is find out. is a very important and conceptual based problems है. तो पहला वर्क जो गिवन है, जैसे आप दिस इज द f of x plus y is given f of x प्लस सॉरी f of x into f of y. ओके. तो यदि हम क्या करें, मान लीजिए दिस इज अगर x y फर्स्ट इज जीरो ले लेते हैं. x मींस इट कैन बी रिटन एज 0 plus 0 देन इक्वल्स f of 0 हियर f of 0. और दिस इज f of 0 यदि हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लीजिए, स्क्वायर नहीं कर सकते. दिस इज f of 0 1 minus f of 0 this 0. But f of 0, so this is not equal to 0, then 1 minus f of 0 equal to 0. This is f of 0 is equal to 1. f of 0 की वैल्यू फाइंड आउट होगी, क्योंकि हमें f of 0 लगने वाला है. जो हमारा अकॉर्डिंग टू फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग हमें f of 0 की रिक्वायर्ड होगी. सो दिस इज द f of 0 हमने फाइंड आउट कर लिया. अब जो वर्क है f dash 0, f dash 0 इज गिवन है. तो f dash 0 के अकॉर्डिंग हम वर्क करने वाले हैं. हियर इज इम्पोर्टेंट. तो f dash 0 is 3, f of 0 देखते हैं. so f dash 0 is given, f dash 0 equal to 3 is given है. so what is the meaning of this? simple, limit s tending to 0 f of sorry this is f of x minus f of 0 upon x. ये फार्मूला है, आप इसको भी टारगेट कर सकते हैं. दिस इज x माइनस 0, दिस इज द फार्मूला इज इक्वल टू 3 ऑलरेडी गिवन है. तो यदि आप हम s टेंडिंग के 0 के थ्रू जाएंगे, दिस इज व्हाट f of h हियर, और दिस इज आल्सो h. तो लिमिट ऑफ s टेंडिंग टू 0 f of h minus f of 0 upon h. ठीक है. ओके, नो प्रॉब्लम्स. इज इक्वल टू 3. ब्रेक कर देना है हमें. लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of 0 plus h minus f of 0, दिस इज h इज इक्वल टू 3. क्योंकि 0 के फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट्स करना है, तो ध्यान में रखिए दिस इज f of 0 है. तो लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0, इट कैन बी रिटन एज f of 0 f of h minus f of 0 upon h is equal to 3. okay. so f of 0 taken the commons outside this, so this is f of 0 into limit s tending to 0 f of s minus 1 upon h is equal to 3. so f of 0 is 1, so f of 0 is 1 हो गया. तो नेक्स्ट वर्क f of 0 is 1, so limit s tending to 0 f of s minus 1 h is equal to 3. this is suppose equation number 2, this is 2. अब जो वर्क है जो हमें फाइंड आउट करना है उसके अकॉर्डिंग टू वर्क करना है. सो f dash 5, so formula what is the f dash 5? 5
This is f dash 5. So limit of s tending to 0, f of x minus f of 0 upon x minus 0. Otherwise, limit s tending to 0, f of 0 plus h minus f of 0, this is h. So again break it, that use this formula concept is here, f of 0. So limit s tending to 0, f of 0, f of h minus uh, minus f dash 5 फाइंड करना है ना, दिस इज f dash 5, sorry. So that case ठीक है, f dash 5 that is h in place 5 है ना, not to 0, this is f dash h means that is the 5, 0 plus, तो 0 plus 5 हो जाएगा यहाँ पे, या h tending to 5 कर सकते हैं, not 0, this is 5 because as tending to 5 already questions में given है, as tending to 5. Here what one mistakes is here, x minus 0 h सो हियर इसके कंसेप्ट को हम समझते हैं, बट इज इम्पोर्टेंट है पहले इस फार्मूले के कंसेप्ट को समझना. सो अभी पहले हम एक फार्मूला राइट अप करेंगे. जैसे देखिए क्या होता है, एफ डैश सी लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी. सो दैट इज द कंसेप्ट इज हियर, सिंपल. तो अभी हमें एफ डैश 5 फाइंड करना है. So now limit of x tending to 0 5, suppose प्लस पे वर्क कर लेते हैं, तो दिस इज f of x माइनस f of 5 अपॉन, समझने की कोशिश करिए, दिस इज x माइनस 5, नो प्रॉब्लम्स. या लिमिट s tending to 0, ओके. सो हियर हो जाएगा आपका f of 0 plus h माइनस f of 5 and here 0 plus sorry uh, 5 plus 0, okay. X is the value 5 plus h, sorry, और h plus 5 minus 5, okay. Clear अभी that explained है, तो s tending to 0 होगा, so then we can convert to this. So important है, that is a cancel. Limit s tending to 0, it can be written as f of 5 f of s minus f of 5 upon this h. F of 5 is the common, so take this inside this limit h tending to 0, f of h minus 1 upon h, और this is already find out in 3 था, और this is 2. So this is 2 into 3, that is the 6. So that is your answer is correct. So that concept is important, clear, cut to simplify. Okay. Now next. Next same solutions is here. fxy is equal to given है, f of x y is given f of x f of y, क्योंकि f of 0 हमें रिक्वायर्ड होता है प्रॉब्लम्स में, तो f of 0 हम पहले फाइंड आउट ही कर लेते हैं, देखते हैं अगर मिलेगी रिक्वायर्ड होगी तो देख लेंगे. f of 0 is equal to f of 0 into f of 0. So here this is put x y, तो f of 0 is here 1 minus f of 0, this is f of 0, तो not equal to 0, this is 1 minus f of 0 equal to 0, that case f of 0 equal to 1. That is the concept. First f of 0 is find out, then go to what is the given, and then जो given है उसके according to work कर लेंगे हम, हमें क्या find out करना है और हम क्या find out कर सकते हैं, समझ में आई बात. So that is important. जैसे f dash 1 is given है,
f dash 1 is given is 2। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे, देखिए हमें क्या रिजल्ट फाइंड आउट हो सकता है, उस रिजल्ट के थ्रू फिर हम लास्ट का वर्क करने जाएंगे। ओके, तो f dash 1 it means it can be as literal limit as tending to 0 f of 1 plus h minus f of 1 upon 1 plus h minus 1। ठीक है, वो यूज दिस फार्मूला एंड इज इक्वल टू 2। ये फार्मूला है, इस फार्मूले को आप ब्रेक करके कर सकते हैं, जो f dash लिमिट x टेंडिंग टू c एंड सो ऑन। सो सिंप्लीफिकेशन इज लिमिट ऑफ s टेंडिंग टू 0, दिस इज f of 1, ओके, f of h minus f of 1 upon h, this is 2। so and f of 1 is already common here, so this is f of 1 is common, limit h tending to 0 f of s minus 1 h, this is 2। और f of 1 already given है, but f of 1 is given, no given। हमने यहाँ पे क्या फाइंड किया, दिस इज f of 0, बट f of 0 के यहाँ पे रिक्वायर्ड्स नहीं है, तो f of 1 फाइंड आउट करना होगा हमें। ठीक है, f of 0 is not required, so it means we find out the f of 1, क्योंकि प्रॉब्लम्स में कहीं भी f of 0 फाइंड आउट नहीं हो रहा है, तो f of 1 को आपको फाइंड आउट करना है। तो इट मींस अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, f of 1 को फाइंड करेंगे, मतलब 1 into 1, this is the f of 1 is equal to f of 1 into f of 1। okay, this is f of 1 minus f of 1 f of 1, f of 1 is common, this is a, so 1 minus f of 1 0, imply that f of 1 is not equal to 0, so but f of 1 is equal to 1, so that is f of 1 is 1, that is important task is f of 1 is find out। so here put f of 1 is 1, so we get only this limit h tending to 0 f of h minus 1 h is 2। this suppose this is equation number 1, this is 2। अब go for f dash 4 is important, go for f dash 4 calculations। f dash 4, this is same concept is here, f dash 4, so limit h tending to 0 f of 4 plus h minus f of 4 divided by 4 plus h minus 4। you go to concept this limit h tending to 0 f of 4 into f of h minus f of 4, and this is h। so f of 4 already given and taken the common, this is f of 4 is the common, limit h tending to 0 f of h minus 1 or l, this is already find out, so this is 4 into 2, that is it। so that go to the answer is here, another is wrong। so that type of concept is used and solve the problems। so first is important है, सभी problems में देखिए इस तरह से आ रहे हैं, f of s minus 1 upon s, तो अकॉर्डिंग टू जो कंसेप्ट रिक्वायर्ड होंगे उस कंसेप्ट को यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स को। ओके, नाउ गो टू द नेक्स्ट सॉल्यूशंस। 23 24 numbers is here, go for solution। what, okay, so simple, use this concept here, f dash x, everyone is the limit, not limit, limit h tending to 0 f of x plus h minus f of 0 upon h, that is a concept of formula, sorry, f of x। ठीक है, f of x plus h और माइनस f of x upon h, दिस इज द फार्मूला। प्रीवियस जो प्रॉब्लम्स में उसमें ये फार्मूला यूज हुआ है, सो आप यूज दिस एंड कैलकुलेट ऑफ दिस। तो f of x इज ऑलरेडी गिवन है fx plus y, तो ब्रेक इट दिस लिमिट h tending to 0 f of x plus f of h minus f of x divided by h, that is the cancels, so limit h tending to 0 f of h upon h। now f of h means is here, go to this, use h square, h tending to 0 h square
gh upon h. So that is the cancel. Limit h tending to 0, h gh, 0 into z0, that is a 0. So that option is correct. Here is wrong. तो ये कंसेप्ट बहुत इजी था, बट ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज फार्मूला इज इंपॉर्टेंट आईएमपी। तो इन सभी फार्मूलों का यूज करके कैलकुलेशंस को फाइंड आउट किया गया। सो नेक्स्ट गो टू दिस। Next problem is here taken. This is given GS continuous then f dash is equal to, कोई डिफरेंट कंसेप्ट नहीं है, सिंपल है जो आप अभी हमने किया था। दिस इज f dash x का जो कंसेप्ट है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of x plus h minus f of x divided by h, दैट इज अ फार्मूला। इसमें ही आपको पुट अप कर देना है और इवेलुएट कर लेना है आंसर्स। सो देखते हैं व्हाट डू यू फाइंड आउट दिस। सिंपल, यूज कंसेप्ट लिमिट s tending to 0, here f of x into f of y, ठीक है, f of x into f of y, this is f of x, so f of x into f of h minus f of x upon h. So f of x is both is the common, so taken f of x outside this limit s tending to 0 f of h minus 1 upon h, and f of h is already given है, this is given है, तो f of h क्या हो जाएगा आपका, f of x at it is limit s tending to 0 1 plus, go to this gh into sin, तो gh into sin of 2h upon h, ठीक है, this is sin of 2h upon h. So now break it and minus, sorry, and minus 1 भी है, take the f of x is the, so this is minus 1 here, so 1 cancel, f of x limit s tending to 0 gh upon sin of 2h upon h. so एडजस्टमेंट्स कर दीजिए sin x upon x के फॉर्मेट में, लिमिट s tending to 0 gh into limit s tending to 0 sin of 2h upon 2h into 2, so that value is 1, f of x g0 into 2, 2 f of x 0, so 2 f of x g0, that is answer and another is wrongs. तो ये concept basically use and calculate, that what must be important, that derivatives formula. तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, कोई अनदर मेथड्स यूज नहीं हो सकता है। सो देन वी गो टू दिस डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अब आते हैं, इज लास्ट कॉन्सेप्ट इज हियर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इज इंपॉर्टेंट है, कह रहा है gx इज द इनवर्स फंक्शन, gx इज इनवर्स फंक्शन, सॉरी इनवर्स फंक्शन है ना, gx इज इनवर्स फंक्शन, ठीक है, gx इनवर्स फंक्शन fx फंक्शन, इनवर्स फंक्शन of an interval fx. So now जब fx है मीन्स here क्या हो जाएगा आपका gof g-o-f-x is equal to I of x. That is the rules है inverse function. This is the x belongs to R. ये concept है. This is the inverse function identity invertibles होगा, simple है. This is the invertibles concept.
use this is here, otherwise g o f x is equal to x. That is invertibles concept is here, difference or not difference is this ix is here important. तो बहुत ही important है, this is note this points. ठीक, अब हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, दैट इज द फाइंड आउट द डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग. So GOFX derivative is 1. Okay. Now apply the chain rule. ठीक, this is apply chain rule. So we get this G dash. No, sorry. Apply the chain rule. Chain rule. Otherwise, first we write down this ZOF derivative. This is x. Okay, this is 1. तो ये मिलेगा G dash. Sorry, this is chain rule. Apply G dash f of x or into f dash x is equal to 1. That is the concept of this. ये chain rule है, तो आप इसको याद रखेंगे. That is important. ये फार्मूला है, तो आप इसको याद रखेंगे, दैट इज अ फार्मूला इंपॉर्टेंट. ठीक, तो इस फार्मूले का यूज करना है और इस इंपॉर्टेंट है. जो गॉफ है मतलब कंपोजिट फंक्शंस है, कंपोजिट फंक्शंस, तो इस तरह से अगर इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये डेरिवेटिव आपको मिलेगा. आप किसी बुक्स में ढूंढ लीजिए, वो आपको ये मिल जाएगा. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये टॉपिक है, तो दैट इज रिमेंबर दिस. Here is note down this, that problems is a invertibles and then he write down this and go for this is important. तो अभी आपको g dash f of x find करना है. This is 1 upon f dash x. So then go for this. But कह रहे कि at point a पे find करना है, तो at a point a पे find कर सकते हैं आप. f dash a. So that go to this. तो दो पॉइंट्स 1 to 3 पॉइंट्स इज इंपॉर्टेंट है. जब व्हेन इन्वर्टिबल ऑफ दिस बट इज इट मींस ये इन्वर्टिबल्स मतलब हो गया, तो इन्वर्टिबल है. ठीक, so invertible is ix and ix means is your identity function example कर सकते हो, that is x common. और after then go to the function, use the totally concept of the function, then we solve the problems. तो आप फंक्शंस में आइडेंटिटी फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शंस एंड जो उनके कंसेप्ट है उनको यूज करके सॉल्व कर दिया गया. एंड दैट इज इंपॉर्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, दैट इज द गॉफ, डेरिवेटिव ऑफ composite function, and then we can solve the problems. This is a very important task. ठीक है, तो आप उसको ध्यान में रखना है. एक्चुअल्स में ये डेरिवेटिव फाइंड किया हमने, बट इज ये f of x है आउटसाइड दिस, मतलब ये मीनिंग है दिस तरह से डेरिवेटिव ऑफ को फाइंड आउट किया गया एंड देन कैलकुलेट्स. सो टेक केयर्स एंड और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम को आप कर सकते हैं. बट अभी नेक्स्ट मे बी पॉसिबल होगा तो और एक दो क्वेश्चंस करेंगे. अदरवाइज नेक्स्ट टॉपिक्स होगा मेरा प्रॉपर इंटीग्रल और फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल इज मोर देन वन वेरिएबल. मतलब सपोज क्वेश्चंस में अगर आपको अभी एक्स वाई इंक्लूड है, तो इसको आपको कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल चेक करना है. इस फंक्शन इज कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल, देन हाउ टू चेक function is continuous differentiable and more than two variable are involved in questions. So take care that type of problems. And finally is if अगर आपको this likes my that type of notes and problems, so आप वीडियोस को फॉरवर्ड्स करते रहें, जैसे एक दूसरे की हेल्प हो. सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद.